So Zoom is just preparing the YouTube live stream, and we'll just start shortly. Sure. I heard you. No, it's a very good initiative. I think so. This is on YouTube now. So yeah, it's good. As they say, especially in law, it's a lifelong learning process. Yeah, and I think all exceptional people only remark in this respect. So hello and welcome once again to this humble initiative, your humble initiative to Vestralex free online community classes on law. This is your initiative by you for you, and we hope that this helps you, I, and everyone in our country, in the world who wants to understand the elaborate plethora of laws that encompasses India. So this is only possible. I need to mention in the start itself through the kind and considerate efforts and the selfless time and efforts which are devoted by our seniors at the bar, at the bench, our colleagues, and to, to ensure that we get a better and broader understanding of what exactly is law and what exactly is the legal environment that encompasses India. So today we have with us Mr. Anant Merathia, an advocate from Madras High Court. He is an author as well. He's written a book that's called The Defaulter's Paradise Lost. Mr. Marathia, he is a corporate as well as a company lawyer. He primarily heads his association, which is called Anant Merathia and Associates. They have offices in Chennai and are in the process of opening an office in New Delhi as well. They have an elaborate and extensive practice in the IBC domain and with respect to helping organizations understand the company law better and fit themselves properly in the compliance bracket of companies. So he's asked me to keep his introduction very simple and sweet. That's his humility, and at the same time, is we're grateful to him being so nice and sweet to come with us, and at this point of time, take us through an analysis of the Insolvency and Bankruptcy Code over the years. So we'll be, we're just hopeful of the kind of learnings that we're going to get from Mr. Marathia. And keeping this short, I humbly request Mr. Marathia to kindly take over the class and enlighten us with respect to this unique topic and this analysis of the Insolvency and Bankruptcy Code. Mr. Marathia, we welcome you and we request you to kindly take this class forward. Thank you so much. Thank you, Keshavji. Very nice of you to reach out, and you guys are doing, I think, a fabulous job. And I'm not saying this just for the sake of saying this, but the fact remains, as I was mentioning earlier, that one has to continue learning. Learning is a continuous process, and over the years, if I can say this with some amount of experience, with about 19 years of experience at the bar, the day you think as a lawyer, as a professional, the day you kind of stop learning or stop taking and absorbing new things, uh, a kind of stagnation starts coming into your practice and the way you think, the way you uh, look at issues and problem solving as lawyers, which effectively what we're doing is either problem solving or strategizing, and of course then delivering in the court. So the long and short of it is yes, continued education. And one thing, if you see before we get to the subject, if you see all the major institutes, all the major professions, they have a continuous CPE learning concept, continuous learning hours, and all of that. But in our legal thing, there is no specific mandated thing under the law. So I think the self initiated exercises like this are great. So thank you so much. Absolutely a pleasure. And yes, so I think I will now share the screen. And is the screen visible? Please, if somebody could, Keshav, if we just confirm that the screen is Yes, visible. yes, yes. Yeah. Yeah. So what we are going to do today is, can I kind of switch between Hindi and English if the audience is largely comfortable with that? Of course, subject to what the audience. I mean, I'm okay with both, but yeah. Yeah, yes, Mr. Marathi. Actually, as a matter of fact, we request you to kindly speak in Hindi as well, so that we can better understand what exactly is the law. सोचते तो हम हिंदी में ही है, तो हिंदी में जितना आपको जितना कंफर्टेबल लगे और जहां पर जरूरी ऑफ कोर्स वहां पर आप अपने हिसाब से उसको मैनेज कीजिए. तो फिर ठीक है, तो फिर ऐसा करते, फिर सेशन को हम लोग हिंदी में स्टार्ट करते, जहां मुझे लगेगा कि मुझे इंग्लिश में स्विच करना है, मैं वैसा करूँ. सो आई थिंक लेट्स कीप इट दैट वे. लेट्स सी हाउ इट गोस. Thank you. सो इस सेशन का ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही रहेगा, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, दैट देखिए, आप इंसॉल्वेंसी कोड एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये हम सब जानते हैं.
और इट्स द पीपल हु क्वाइट अ फ्यू पीपल, काफी यंगस्टर्स हैं जो इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो इट्स इंटरेस्टिंग एरिया, इवॉल्विंग एरिया है, नेसेंट है, 6-7 साल ही हुए हैं. So we will not be getting into nitty-gritties and technical aspects of what the law has, specific एक case law की study, because then that becomes a separate subject that's possibly for a slightly advanced level. हमारा एटलीस्ट मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव इस सेशन का ये है कि एट द एंड ऑफ द सेशन आपको एक ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू मिल जाए कि ये क्या लॉ है, इसमें कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं, लॉ का क्या इवोल्यूशन रहा है पिछले 6-7 साल में, कुछ क्रूशियल जजमेंट्स क्या आए हैं, परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका, क्योंकि ये एक वन ऑफ द फ्यू लॉज है जो बहुत क्लोजली मॉनिटर्ड है डेटा के बेसिस पे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है. एंड मे बी देन ऑफकोर्स इफ देर इज एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक्स वी कैन लुक एट दैट ऑल्सो. सो ये हमारा अप्रोच होगा. और तो इस अगर आप इसे देखें तो यही इस प्रेजेंटेशन का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि एक ओवरव्यू ऑफ क्यों इस लॉ की जरूरत पड़ी, क्या था, क्या क्या सिचुएशन थी. एंड या आई थिंक इट्स ऑल देयर. सो रादर देन मी जस्ट रीडिंग इट आउट, आई विल जहां मुझे लगेगा. सो जेनेसिस ऑफ, हम आईबीसी की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन आईबीसी की जरूरत क्यों पड़ी, एक ऐसे स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत क्यों पड़ी इस देश में जहां क्या क्या था सिचुएशन इसके पहले, इसका थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं. सो देखिए, 91 में लिबरलाइजेशन हुआ, उसके पहले थिंग्स वर डिफरेंट. I'm presuming all the audience here are people who are largely, I would say, born post 80s, post 90s. So ग्रोथ स्टोरी इंडिया की स्टार्ट हुई, आप समझिए, दो लेट 90s अर्ली 2000s में. और 10-12 साल काफी लोन्स दिए गए, जिसे हम इंडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग करते हैं, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है ऑल टुगेदर. लोन्स की एवरग्रीनिंग होती थी. एवरग्रीनिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है. मतलब ये है कि आपका लोन, आप जब कंपनी उसको सर्विस नहीं कर पा रही है इंटरेस्ट, तो क्लोजर टू द 31st मार्च, जब जब बैंक को बैलेंस शीट अपना क्लियर दिखाना होगा, दे वुड सैंक्शन एडिशनल अमाउंट एंड यूज दैट अमाउंट टू रीपे द इंटरेस्ट. तो ये कुछ चीजें चलती जा रही थी. 2008 का भी जो क्राइसिस आया था, ग्लोबल क्राइसिस, उसका भी एक रोल रहा. बट बाई एंड लार्ज हमारा से द फाइनेंशियल सिस्टम वाज नॉट टू वेल डिसिप्लिन. So that was where the challenge was. So this led to a lot of debts, defaults. सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि करीबन 11.5 लाख करोड़ रुपए हमारे एनपीएस थे, समवेयर अबाउट 2015-14 की बात है ये, जब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार, ये कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज इट वाज इफ इट वुड हैव कंटिन्यूड दिस वे, आई थिंक टुडे हमारी भी हालत वही होती जो काफी आप वेस्टर्न इकोनॉमीज की देख रहे हैं, जहाँ वन बैड डिसीजन आफ्टर द अदर. क्योंकि आप एक प्रॉब्लम को एक पॉइंट तक की विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं, बिकॉज एट सम पॉइंट यू हैव टू, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, बाइट द बुलेट. आपको एक टफ डिसीजन लेके आगे बढ़ना होता है. तो एक बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी एस्टैब्लिश की गई 2014 में, बीएलआरसी, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि एक एक ऐसा कानून बनाया जाए जो स्पीडी रेजोल्यूशन पे काम करे, रिकवरी इंपॉर्टेंट हो. तो अनसिट्राल के कुछ, यूनाइटेड नेशंस के कुछ बीएलआरसी लेजिस्लेटिव गाइड्स थे, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया. तो एक स्टडी स्टार्ट हुई, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि आईबीसी का, आई मीन आईबीसी लॉ केम इनटू प्लेस इन 2016. आईबीसी के पहले क्या क्या लॉज थे हमारे, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ. सरफेस ही था, आरईडीबी एक्ट था, जहाँ डीआरटीज में केसेस, जो आप सबको मालूम है, काफी समय लगते थे. द एवरेज टाइम टेकन वाज 2.7 years, कभी कभी 7 साल, 8 साल, टू गेट जस्ट द फाइनल ऑर्डर, जहां आपको ये मिलता है कि दिस इज द अमाउंट यू आर पेबल फ्रॉम द कंपनी टू द क्रेडिटर. तो द बैंक्स आर स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा कोई लीगल रेजिम नहीं है जहां बिजनेसेस जो डिफॉल्ट कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, उन्हें कुछ दे गेट अ, व्हाट डू आई से, लीगल पुश. सो दैट वाज मिसिंग. सो एंड जो बीआईएफआर करके एक बॉडी बनी थी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अर्ली 80s में, शुरू में उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था. देखिए, उसका नाम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि जो कंपनी सिक हो गई हैं, सिका, वो सिक इंडस्ट्रीज, सिंग, उसका जो एक्ट था कि कंपनीज जो फाइनेंशियली सिक हो गई हैं, उन्हें कुछ रिवाइव किया जाए, रिहैबिलिटेट किया जाए. लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. शुरू में था, बट बीआईएफआर में यही चैलेंज हुई कि फिर एक पॉइंट आने लगा कि
मॉरिटोरियम मिल जाता था कि हाँ PIFR में रजिस्टर्ड हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। तो कंपनीज ने इसको यही किया कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके दे वर सिटिंग ओवर इट एंड दे वर नॉट रियली वर्किंग ऑन रिहैबिलिटेशन। तो problem is there, problem still was the same. It was just that one न्यू मैकेनिज्म्स वर बीइंग ट्राइड। लोग आज IBC के लिए भी ये बोलते हैं, वी विल डिस्कस दैट लेटर, दैट आप बोल रहे हैं कि IBC आज तो है, बट इज इट इफेक्टिव, हाउ इफेक्टिव इज इट, एंड हाउ कैन इट बी, व्हाट्स द गारंटी इट्स नॉट मूविंग टुवर्ड्स द सेम VIFR थिंग जो हम, दैट आई विल लीव इट टू यू एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर पॉइंट ऑफ आई थिंक a Q&A एंड डिस्कशन लेटर। सो ये सब बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में IBC वाज इंट्रोड्यूस इन 2016। कीप इट शॉर्ट। NCLT जो कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करती थी उनको कन्वर्ट कर दिया गया NCLT में। पहले चार ही थी, कंपनी लॉ बोर्ड, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। फिर there were more NCLTs that were open in other places, आप सबको मालूम है। If I'm not wrong, there are about 16 benches now. ऑब्जेक्टिव इस लॉ का ये था कि क्रेडिटर्स और लेंडर्स के लिए एक ऐसा कोई लॉ लाया जाए जहां कंपनीज थोड़े सीरियसली ले। 2016 में IBC आया, इफेक्टिवली 2000 दिसंबर 2016 में थिंग स्टार्टेड मूविंग। फर्स्ट मैटर वाज एडमिटेड इन द NCLT ऑफ मुंबई। इसमें एक बॉडी को एस्टैब्लिश कर दिया गया जिसका नाम था IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, which was like a regulatory, which is the regulatory body for IBC, and they've done some fabulous work. IBBI, uh, तो आज के दिन एज somebody who does IBC day in and day out, में ये मेरा कोर प्रैक्टिस एरिया, क्योंकि हमारा जो लोग कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट की प्रैक्टिस करते थे, 1956 का जो लॉ था या उसके बाद 2013 का भी जो लॉ, उसमें जो हम लोग काफी काम करते थे, स्कीम्स, रिहैबिलिटेशन, वाइंडिंग अप, वो ऑटोमेटिकली एक तरह से इसमें जाके मर्ज हो गया। तो ऑब्वियसली एज अ कंपनी लॉयर वी गॉट मूव टुवर्ड्स दिस, एंड जिस तरीके से IBBI ने काम किया है, इट्स नोटवर्दी। अब IBC का ऑब्जेक्टिव और प्रियम्बल ये था कि एक ऐसे कानून को लाया जाए जो कंसोलिडेट करे हमारे जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी के लॉज हैं, उनको एक जगह कंसोलिडेट करे, चाहे वो कंपनीज के लिए हो, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हो, इंडिविजुअल्स के लिए हो। ये अलग बात है कि आज के दिन सिर्फ कॉर्पोरेट, दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो, कि आज सिर्फ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिस्टेड कंपनीज एंड LLPs आर बाउंड बाय उसके रूल्स हैं, एंड दैट इज अंडर प्रोसेस। पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स का अभी IBC नहीं, दे हैव नॉट नोटिफाइड इट। पर्सनल guarantors has been notified, दो बार उसे कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया, both the times the Supreme Court has confirmed it. So IBC is by and large in the context of corporates, which is companies. एक टाइम बाउंड रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया जाए, ये एक प्रियम्बल जो IBC का कहता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जब सिक हो गई है, कंपनीज इन अ बैड शेप, उसके बाद लिटिगेशन चल रहे हैं ओवर द इयर्स, द एसेट्स आर एसेट, प्लांट एंड मशीनरी। पहले क्योंकि हमारे देखिए आप 80s और 90s के आप ये समझिए कि द कंपनी भी ब्रिक एंड मोर्टर की कंपनीज होती है। So largely you have factories, you have assets, and they would with time deteriorate and things like that. So वो भी एक इम्पोर्टेंट था। आज का मॉडल अलग है, 2010 के बाद 2000 फॉर अदर आई वुड से पिछले 15 साल में बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो एसेट लाइट मॉडल्स हैं, तो वो कंपनीज का अब एक एक चलन हुआ है। लेकिन पहले इट वाज ऑल हैवी, आई वुड से जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली हैवी कंपनीज होती थी, जहाँ ब्रिक एंड मोटर का एसेट होता था। तो उसका वैल्यू को मैक्सिमाइज किया जाए। ऐसा नहीं हो कि जब तक आपको सोल्यूशन मिले आई कंपनी के फाइनेंशियल डिस्ट्रेस का, वो एसेट्स ही यूजलेस हो जाए, एंड देन देयर इज नोबडी टू रिवाइव। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स को बैलेंस करना, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था, एंड आई एम सॉरी, आई नो दिस इज लाइव, बट आई डोंट माइंड सेइंग इट, क्योंकि मैंने ये अपने पॉडकास्ट में भी बोला है। एक समय ऐसा आ गया था, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर प्रमोटर ऐसा सोच रहा था इस देश में, लेकिन 90s 2000 स्पेशली एक ईरा था, promoters were taking loans left right center for over expansive expansion plans. They were signing any document under the sun to take the loans. Thought process एक तरह से ये था, and this I'm saying from first hand experience, is that यार लोन देख लेंगे, जब देना होगा उस टाइम देख लेंगे। So that's the indirect, somewhere the subconscious mind is saying कि यार नहीं भी देंगे तो चलेगा, हाउ डज इट मैटर यार, लीगल मैटर जाएगा चलेगा, 10-15 साल देखा जाएगा क्या होगा। तो ये थिंकिंग को चेंज करना बहुत जरूरी था कि आप क्रेडिटर्स वेयर, आई मीन दिस इज अ फैक्ट, आप गूगल कर लीजिए, आप जाके पुराने रिपोर्ट्स पढ़ें, अगर लॉ कमीशन के और वेरियस अदर बॉडीज के, RBI के रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि द बैंक्स यूज्ड टू गो ऑन एंड ऑन बिहाइंड द कंपनी। और द जोक वाज कि ऐसा ठीक है, आपको कोर्ट जाना है, आप जाइए, 10-15 साल और खींचेंगे मैटर को। सो दैट बिकेम द थिंग। बैंक्स वर टेकिंग डेस्परेट वन टाइम सेटलमेंट्स, OTS होते थे। तो ये एक जरूरी था कि कहीं, ये तो हो गया बैंक्स का, इवन अदर स्टेक होल्डर्स जो सप्लायर्स होते थे, मटेरियल सप्लायर्स, क्रेडिटर्स,
उनकी भी यही हालत थी कि अगर कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, योर लीगल रिकोर्सेज वर ऑफ कोर्स देयर। आप सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, आप रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं, वट एवर यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। बट एज मोस्ट ऑफ यू बीइंग पीपल फ्रॉम सम काइंड ऑफ a लीगल बैकग्राउंड, आप जानते हैं कि थिंग्स वर स्लो. Long and short, I can get into more details, but things were slow because we have a lot to cover, so I will not get into that part at the moment. So balancing the interest of stakeholders was also important. IBBI को of course establish किया गया, which I was mentioning. अब इस लॉ के अंदर की स्टेक होल्डर्स कौन बने? सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये आपको जानना जरूरी है, विच इज बेसिकली बैंक्स, एनबीएफसी, जिनकी एक सिक्योरिटी, जो कंपनी ने एक सिक्योरिटी दी है और उस लोन उसके बेसिस पर मिला है. सिमिलरली जहां अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है, एनबीएफसीज, इंडिविजुअल्स, समटाइम्स इट इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, जहां आपने गुड फेथ बेसिस पर या आपने अपने एक रीजनेबल इवैल्यूएशन पे लोन दिया है कंपनी, दोज अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. होम बायर्स प्लान्ड क्रेडिटर्स तो नहीं थे, लेकिन हाँ, जब जैसे लॉ इवॉल्व हुआ, सुप्रीम कोर्ट को लगा थिंग्स वेंट sour because home buyers were struggling, especially in the Delhi NCR region. We all know JP Infra is a classic case, जहाँ हजारों होम बायर्स को ये मालूम नहीं था कि उनका फ्यूचर क्या है. You put all your hard earned money or your life and soul and all of that, and your money is stuck. You don't know what's going to happen to the project. So they also became part of the creditors, financial creditors category, and these three put together comprise of something called the committee of creditors. इसके अलावा जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट होता था और है ज्यादा, आई वुड से, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. Now, insolvency professional is an individual who runs the entire insolvency process. ये typically आपको, it can be a chartered accountant, company secretary, a lawyer, somebody who has passed certain exams. उनके कुछ qualifications होती हैं, कुछ criteria होता है, उनकी training होती है. Now, these are the people who should be basically, if I may say, running the process. यहाँ एक चीज समझना जरूरी है. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज नॉट अ बिजनेस पर्सन. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो इंसान कंपनी को रन करेगा और कंपनी को प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट कर देगा. वो उसका काम वैसे भी, आई वुड से, अगर वो होता है तो अच्छी बात है, बट वो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है. लेकिन ये पूरे प्रोसेस को रन करना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना, लोगों को बुलाना कि हाँ ठीक है, कंपनी अवेलेबल है, आप इसको कैसे अक्वायर कर सकते हैं, हाउ कैन यू टर्न अराउंड, ये बैंक्स को मैनेज करना, सीओसी के मेंबर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करना. That was the insolvency professional's job, and this is a very very crucial. This person is, if I may say, ये एक तरह से एंकर है पूरे पूरे प्रोसेस का, और पूरे प्रोसेस को चलाता है, फैसिलिटेट करता है. कोर्ट्स एनसीएलटी अपॉइंटेड होते हैं, एनसीएलटी इज द कोर्ट, दे अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. ऑपरेशन क्रेडिटर वो होते हैं जो दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दीज कंपनीज हु आर रनिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस. गारंटर्स कैन बी कॉर्पोरेट एंड पर्सनल गारंटर्स. जब कंपनी लोन लेती है तो कई बार ग्रुप कंपनीज उनको गारंटी देती है, जो कॉर्पोरेट गारंटर बन जाते हैं. वैसे ही जब प्रमोटर्स इंडिविजुअल लेवल पे गारंटीज देते हैं, दे बिकम पर्सनल गारंटर्स. रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स आर पीपल हु बेसिकली हु कम एंड बिड फॉर दीज कंपनीज, तो से हाँ ठीक है, मुझे इस कंपनी में इंटरेस्ट है, मैं इस कंपनी को एक्वायर करना चाहूँ. सो दैट इज योर रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स दे आर द नर्व सेंटर, और दे आर पार्ट ऑफ द कंपनी थ्रू आउट द प्रोसेस. वो पहले भी रहते हैं, जब कंपनी अच्छे टाइम पे चल रही होती है तब भी, डिस्ट्रेस में है तब भी, और आगे जाके जब रेजोल्यूशन प्रोसेस में रन हो रही होती है. एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय ऑफ कोर्स वर्कमैन आल्सो देयर. बट ये, आई वुड से, आर द बाय एंड लार्ज ब्रॉडर स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस. अब ये तो हो गया कि एक बेसिक आईबीसी के पहले क्या सिचुएशन थी, क्यों आईबीसी जैसे कानून को लाना पड़ा, और उसने क्या इकोसिस्टम सेट किया. इसके बारे में आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी रीडिंग, मस्ट हैव रेड ओवर द ईयर लॉट इन द पेपर्स कि ये हुआ, ये सब चीज. तो थोड़ा उस पर एक नजर डालते हैं कि एक्चुअली आईबीसी ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉपुलर केसेस जिसको आप रिलेट कर पाएंगे आप, क्या हुआ उन केसेस में, जब उन केसेस को इंसॉल्वेंसी में रेफर किया गया, वेयर देर एक्चुअली सॉल्यूशंस, और द प्रॉब्लम्स ओनली कंटिन्यूड, और वाज द सॉल्यूशन अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हर्डल्स, व्हिच इज गोइंग टू बी मोस्टली द केस इन ज्यादातर सिनेरियोस. तो ये स्लाइड एक एक सॉरी ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जहां आप देखेंगे कि कुछ 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 काफी नामी नामी कंपनियां हैं देश की, वेयर दे हैव, दीज कंपनीज हैव, अगर आप क्लेम अमाउंट्स देखेंगे, सपोज लेट मी टेक फॉर एग्जांपल, so Bhushan Steel, let me, for the second name, that was a good resolution process, because 57,000 crores का क्लेम आया था जिसकी लिक्विडेशन वैल्यू सिर्फ 14,000 crores थी.
दिस इज वेयर आई कम बैक टू दैट 57,000 करोड़ का अगर आज क्लेम आ रहा है और कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू 14,000 करोड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि जेनेसिस प्रॉब्लम का कहाँ है। वो यहाँ नहीं है। जेनेसिस प्रॉब्लम का तब था जब लोन दिए गए, तो लोन्स वर गिवन एट सम वैल्यूएशन व्हिच आर नॉट रियलिस्टिक। नहीं तो चीजें इतनी खराब नहीं होती। आप मोस्टली सब कंपनीज में देखेंगे, क्लेम का वैल्यू और लिक्विडेशन के वैल्यू में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स ऑलमोस्ट 10%, 15% ऑफ द क्लेम। ये भी बात सच है कि आज जब क्लेम कोई फाइल करता है तो वो दे, वेदर इट्स अ बैंकर, इट्स अ फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशन क्रेडिटर, इट्स अ वर्कमैन, they add the interest, penal interest, everything right till the date when the initiation of CIRP or corporate insolvency started. आप चलिए उसको 20-30% कम कर दीजिए रियलिस्टिक क्लेम बनाने के लिए, फिर भी दे वेर वे मोर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। सो ऑब्वियसली द कंपनी, एक तो गोइंग बैक टू द लेंडिंग पार्ट, वहां चैलेंज था, कंपनी का डिटोरिएशन हुआ, प्रमोटर्स ने कहा, कुछ जगह जेन्युइन चैलेंजेस थे, कुछ जगह इंटेंशन इश्यूज थे। बट अगर आप देखें, रेजोल्यूशंस हैव हैपेंड, एंड इफ यू विल सी बाय एंड लार्ज द रेजोल्यूशंस आर डेफिनेटली मच हायर देन द लिक्विडेशन वैल्यू। और उस पे कुछ जजमेंट्स भी हैं which say that the resolution plan value should ideally, there was a judgment which said that it should be higher than the value of the liquidation value, but then subsequently there was one more judgment which said it need not necessarily be, but on a one-off case or a case-to-case basis, the COC can decide. In commercial wisdom of the COC की जो commercial decision making, final decision making. So as you will see, most of these cases, काफी केसेस में सीए इंसॉल्व कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, और रेजोल्यूशन प्लान आ चुका है, जहां क्रेडिटर्स को एक्स अमाउंट मिला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप, I will just pick up randomly here, Alok Industries. So Alok Industries, 30,000 crores was the claim, 4,433 crores was the liquidation value, and about 5,000 odd crores was the resolution. So it's not a great thing. बहुत मेजर हेयर कट्स मिले हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को, ऑपरेशन क्रेडिटर्स को तो ऑलमोस्ट जीरो ही मिलता है। और इसके इस कारण से इस लॉ को बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता है, इसकी निंदा भी होती है कि ये इतने हेयर कट्स लेके आप कैसे अलाउ कर रहे हैं, आप कैसे, हाउ आर यू अलाउइंग दी, इट्स ऑल बिकमिंग इट्स ऑल बिकमिंग अ स्टेज्ड प्लान, दिस दैट। चैलेंजेस हैं लॉ में, आई एग्री, आई डोंट डिनाई, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या है? आपकी कंपनी की लिक्विडेशन वैल्यू ये है, आपके दो या तीन वैल्यूअर्स ने इस लिक्विडेशन वैल्यू दी है, या कुछ कहीं एवरेज निकाला गया है। यू डोंट हैव यू सो इफ यू, दिस इज वेर यू से आपको एक टफ डिसीजन लेना था, गवर्नमेंट हैड टू टेक अ डिसीजन, एंड एटलीस्ट कंटिन्यूटी ऑफ जॉब्स, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, दे हैड टू रिजॉल्व। सो दिस इज टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि हाँ, कुछ कंपनी अभी भी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में है, कहीं रिकमेंस हुआ है, कहीं लिक्विडेशन। On the right side, you will see some successful companies where now there are names which you by and large know. We'll be covering some of them. So some recent resolution matters, which I will not get into because we have advised them strongly in that. तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा last 2023 वाले में. The names are there. I think उससे ज़्यादा I will not be in a position to state there for professional reasons. So let's look at some popular cases. क्या हुआ? SR Steel, they went into insolvency. ArcelorMittal और New Metal के बीच में, they were uh, there was a major bid, this thing going on between these companies, and basically I think New Metal, if I'm not wrong, was the company which was used by the promoters to bid for the resolution plan, ArcelorMittal, and there was a lot of fight that went on in the SR Steel. COC decision was that nee, we will go with ArcelorMittal's plan of 42,000 crores. इस particular judgment में you will find a lot of summaries of this judgment if you get an opportunity. आप देखिए IBPI में भी शायद एक summary uploaded है, जहां आईबीसी को काफी शेप दिया गया है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का क्या रोल होता है, कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी का क्या मतलब है, एनसीएलटी का कम से कम इंटरवेंशन क्यों जरूरी है ऐसे प्रोसेसेस में। सो हियर द नेक्स्ट स्लाइड यू विल सी इज द रेशियो लेड डाउन कि आई वाज जस्ट मेंशनिंग लिमिटेड स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आप अगर सीओसी ने डिसाइड कर लिया है कमर्शियल विजडम कि हाँ, हमें 50,000 करोड़ हमारा टोटल मिलना चाहिए, और आज किसी कारणवश हम 35,000 करोड़ का एक प्लान अप्रूव कर रहे हैं एक्स वाई जेड का, so NCLT should not get into a judicial review, otherwise it will become a continuously litigated process. ये अलग बात है कि एसआरसीएल जैसे बड़े मैटर्स में 3 से 5 साल या 4 से 5 साल लिटिगेशन चले हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखें, कंपेयर टू वेयर वी स्टूड प्री आईबीसी, आज बड़े मैटर्स में 3 से 4 साल या 5 साल मान के चलिए, छोटे मैटर्स में 2 साल, you are having a solution one way or the other compared to what was happening in the earlier winding ups or in the earlier, if I would say, BIFR matters.
दूसरा एक एस्पेक्ट होता है फीसिबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। ये डिसीजन सीओसी पर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं सीओसी जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे कानून में। सक्सेसफुल आरए, सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, in they should suddenly not be faced with undecided claims after the resolution plan submitted by so and so, and uh, which would amount to hydra head popping up, which would throw up uncertainty amounts payable. क्या थोड़ा दे दें, they write some beautiful English and some good judgment are there. Bottom line of that is that आपको एक क्लीन स्लेट प्रिंसिपल लाना पड़ेगा, फ्रेश, जो अगले पॉइंट पर भी है, फ्रेश स्लेट प्रिंसिपल, कि जब एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक कंपनी को अक्वायर करता है, उस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने 40,000 करोड़ दिए, या इस केस में सपोज 42,000 करोड़ दिए, और उसके बाद सडनली a government department comes and asks for a claim, some other creditor asks for some other claim, some other blank crops up, something crops up. No, that is not acceptable. Once a resolution plan is approved by the NCLT and it attains finality, let's say it is blessed by NCLT or Supreme Court, after all the litigation, it attains finality. It is binding on all stakeholders, and that also means that all other claims get extinguished. Last week, in fact, 4 days back, there was a recent judgment by the NCLAT which said that आप, क्योंकि ऐसा होता है कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, देखिए उनकी भी मजबूरी आप ये समझिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है, वो तो क्लेम टाइम से फाइल करते नहीं है, उनको हैवी हेयर कट्स मिलता है बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज ऑपरेशन क्रेडिटर्स। तो जब एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट एक्वायर्स अ कंपनी, वो एक्वायर करके जब ग्राउंड लेवल पे जाके फैक्ट्री वापस स्टार्ट करना चाहता है, तो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी, लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डजंट कोऑपरेट। वो बोलता नहीं सर, आपने जो भी आपका हुआ है वो हम नहीं जानते, दे नो इट, बट दे से नहीं, हमें हम वी नॉट अवेयर ऑफ इट, और लेट्स गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, दे आर नॉट सो इक्विप्ड विद द टेक्निकल लॉ। जैसा पुराना क्लेम क्लियर अप कीजिए, फिर एक और राउंड ऑफ लिटिगेशन करना पड़ता है, अल्टीमेटली क्लैरिफिकेशन लानी पड़ती है एनसीएलटी या एनक्लैट से resolution applicant को. So there is always some residual challenges which will be there in spite of the fresh late principle. ओवरऑल 330 दिन का टाइम डिसाइड किया गया था कि एक्सेप्शन केसेस में इट कैन बी एक्सटेंडेड एसआरपी में, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक, आईबीसी इज अ बिजनेस रिलेटेड लॉ। जब आप इसे एक्वायर करते हैं, देन अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कांट कंप्लेन कि आई एम आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ए और बी और सी। आपको मालूम है कि आपको एक एसेट जिसकी वैल्यू बहुत बेटर है, हायर है, आपको वो कमती वैल्यू में मिल रही है, तो यू हैव टू माइट एज वेल एक्सेप्ट सम अमाउंट ऑफ, आई वुड से, जिसे हम कहते हैं सम अमाउंट ऑफ हेडेक और न्यूसेंस वैल्यू दैट वुड कम अलोंग। सो दैट्स योर एसआर स्टील। एक और इंटरेस्टिंग केस, बड़ा बड़ा नाम है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज, व्हिच वेंट इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जहां 12,000 करोड़ का डेट था, which was split around almost 9,345 crore. You, the numbers are in front of screen. So अडानी विल्मर का एक क्लेम एक अप्रूव किया गया था सीओसी ने 2018 की अगस्त में, रेजोल्यूशन प्लान। पतंजलि ग्रुप का प्लान आया 4,000 करोड़ रुपए का, बट there was a litigation where Patanjali challenged Adani Wilmar's eligibility under Section 29 Capital A, and the negotiation process went on. 29 Capital A basically was a section that was introduced in IBC where it disqualified a certain section of people, primarily the promoters of the company itself, to acquire for their own company, to acquire their own company, or to bid for their own. उसमें things like willful defaulters, people who have NPAs, जिनके मैनेजमेंट के अंडर कंपनी एनपीए हुई, क्योंकि ये भी एक गलत ट्रेंड हो जाता है कि मैं अपनी ही कंपनी को एक्वायर कर लूं आफ्टर पुटिंग इट इनटू अ बैड सिचुएशन। देयरफॉर 29 कैपिटल ए वाज इंट्रोड्यूस्ड। बाद में उसमें एक रिलैक्सेशन लाया गया कि एमएसएमई कंपनीज के लिए 29 कैपिटल ए में, अगर इफ इट इज एन एमएसएमई और एमएसएमई सर्टिफिकेशन है, then you can still bid for the company under the resolution plan. So that was something. So again, in this particular case, plan was approved, and इसका अगर आप देखें 4,350 करोड़ का जो पतंजलि ग्रुप का रेजोल्यूशन प्लान था, इसका थैंकफुली ब्रेकअप वाज अवेलेबल, आई थिंक समवेयर वन ऑफ द ऑर्डर कॉपीज। तो सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 4,000 करोड़ मिल रहा है, अनसिक्योर्ड को 40, ऑपरेशन क्रेडिटर्स को 90। सो दिस इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है, एंड दिस इज एन एरिया विच आई टाइम एंड अगेन सेड, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बहुत मार पड़ती है। अब देखिए 90 करोड़ मिल रहा है अगेंस्ट 2,750 करोड़, तो आप समझ सकते हैं, चलिए टोकन अमाउंट इज एज गुड एज जीरो। So this is something which I think it's important that the government thinks and comes with some kind of a solution, क्योंकि अगर हर सप्लायर इस तरीके से, अगर एक सप्लायर के 5 कंपनीज उन्हें ऐसे सिवियर हेयर कट्स देके अगेंस्ट
मुझे 5 करोड़ आना है, 3 करोड़ आना है, मुझे टोटल 15 करोड़ 5-6 जगह से आना है, और ऑल दोस कंपनीज आर रनिंग इंसॉल्वेंसी, और हर जगह मुझे ऑलमोस्ट जीरो या और एक टोकन अमाउंट मिल रहा है 20,000 50,000. I, as an MSME supplier or a vendor, myself will run into insolvency, which happens. So ये एक critical point है लॉ का, जो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टाइम एंड अगेन, इवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आईबीसी जो चैलेंज हुआ था स्विस रिबन्स के केस में, वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है, देयर इज अ डिफरेंशिया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिटवीन द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. लॉ इज फॉर द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. बट देखिए, ये लॉ बहुत इवॉल्व हुआ है, समय के साथ चेंजेस आए. आई एम स्टिल होपिंग एट सम पॉइंट इन टाइम ये व्यू बदलेगा और ऑपरेशन क्रेडिटर्स को भी कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए समवेयर और द अदर. Similarly, another important case of Bhushan Steel, अगर आप देखें, this was रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि इनिशियली 12 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया गया था जिनकी एनपीए सबसे ज्यादा थे, ये बड़े नाम हैं. तो हियर इंटरेस्टिंगली it was Tata versus JSW. They both were fighting. Tata emerged as the highest and aggressive bidder with over 35,200 crores rupees for Bhushan Steel. The resolution plan for Tata was approved, COC 99%. Litigation is chale, but आज the company is with Tata. Has set up a wholly owned subsidiary called Bamnipal Steel, which is controlled by Tata, and the resolution plan was finally upheld by Supreme Court. So this is your Bhushan Steel. So again, another success story. जेट एयरवेज वॉज एन इंटरेस्टिंग केस, और इस केस में पहली बार ऐसा कुछ हुआ कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, एक एस्पेक्ट है, लेकिन ये पहली बार था जहां एक केस में एक क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट के बारे में बात की, जहां एनसीएलटी मुंबई ने अलाउ किया एक एप्लीकेशन फाइल बाय द डच एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑर्डर्ड दैट यहाँ का इंडिया का जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एंटर इनटू अ प्रोटोकॉल विद द डच बैंक्रप्सी ट्रस्टी, क्योंकि वहां पर भी कुछ केसेस, वही इंसॉल्वेंसी के केसेस चल रहे थे इन्हीं की ग्रुप कंपनी पे या पेरेंट पे और समथिंग ऑफ दैट नेचर. या आप एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम किए करिए. इंडिया वाज असाइंड एज द सेंटर ऑफ मेन इंटरेस्ट एज पर द प्रोटोकॉल, और डच ट्रस्टीज वर अलाउड टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट इन द सीओसी. उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिली, लेकिन दे वर अलाउड. NCLT set aside the observations of some of the Dutch court कि no jurisdiction, आप Jet Airways का jurisdiction यहाँ नहीं रख सकते हैं. So that is what happened. NCLAT upheld the order of admission, and so now I think Jet Airways, if I'm not wrong, I don't know if it's there in this slide, but it was acquired by. Okay, it's there, yeah. So appeals, obviously the fight went on till Supreme Court. Uh, the concept of cross-border insolvency was for the first time tested a little bit and experimented in this law. एंड इनफैक्ट 2022-23 के बजट में भी ये बोला गया है कि हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी पे थोड़ा काम करेंगे. पॉसिबली नाउ दिस विल हैपन ऑब्वियसली आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द न्यू प्रॉपर बजट. एंड द कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जालान कॉलरॉक group consortium, where they acquired the Jet Airways. JP Infra is a very important case, and a case which is very close to my heart. Here, without getting into the details and technical things, the long and short of this case is, पहले home buyer was not given any status. वहां से they were given a status of some other creditor, और फिर वहां से उनको स्टेटस मिला गया फाइनेंशियल क्रेडिटर. ये भी हुआ कि फाइनेंशियल क्रेडिटर के स्टेटस मिलने से कई बार होम बायर्स ने विदाउट उनको सही एडवाइस नहीं मिली, गाइडेंस नहीं, दे इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट अ वेरी सेम बिल्डर जिसे उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था. बट government brought in some regulations to say, no, at least there should be 10% allottees of a particular project or 100 allottees, whatever as the case may be. And therefore, the law evolved. Uh, अगर आप जेपी इंफ्रा का फाइनल केस अगर आप देखते हैं, तो रेजोल्यूशन प्लान ऑफ सुरक्षा रियल्टी वाज अप्रूव्ड, आई थिंक रिसेंटली, सम टाइम अबाउट, I think earlier this year, with about 98.55% votes. And the SRA is a successful resolution applicant, which is Suraksha. Uh, they are supposed to, pay the debt obligations and do whatever is required. About a 3 or 4 year time period has been given to them to complete and deliver the plans. If you see, special bench NCLT Delhi approved the resolution plan submitted by Suraksha Realty for JP Infra, and directed the successful resolution applicant to deliver, provide possession of the units to the home buyers allottees strictly as per the time frame promised in the resolution plan and approved by this authority. And there is a monitoring committee which will supervise and monitor the progress of the construction of the units and day-to-day development. So this is good. कहीं ना कहीं एक accountability है कि अगर कल चीजें slow होती है वापस, तो there is somebody to look into the issue. IBC वर्सेस रेरा एक अलग सब्जेक्ट है.
That's another one major area which is also being a lot of times disputed upon, debated upon, litigated upon. But yeah, JP Infra, at least 20,000 home buyers were in a positive way impacted. Ki chalo, theek hai, there is some hope, something is happening. Binani Cement was another interesting case where there was a. See, these are big cases. So आप देखेंगे conventionally the fight is between company को acquire कौन करे. Will it be A or B? And in this case, it was Ultratech versus I think Dalmia Bharat. In दोनों के बीच की issue थी. But here the relevant point was the NCLT observed that see a resolution plan must actually it went back to the basics. जो हमने पहले देखा था preamble. A resolution is not a sale or an auction. It's not a recovery process. It is a resolution of the corporate debtor as a going concern. Again, theoretically, और एटलीस्ट द इंटेंट ऑफ द लॉ इज वेरी क्लियर कि आप इसको एक रिकवरी प्रोसेस की तरह ना देखें, आप इसको एक ऑप्शन के प्रोसेस की तरह ना देखें. पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि द कॉर्पोरेटर शुड बी पुट बैक ऑन इट्स फीट. ये अनफॉर्चुनेटली लेकिन जो जो हमारी सीओसी होती है विच इज प्राइमरली द बैंकर्स, द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, उनका माइंडसेट इस तरीके से ट्यून्ड है क्योंकि इतने साल का पुराना बैगेज है कि नहीं हम मैक्सिमम कितना इसमें से रिकवरी ले सके, रिकवरी कर सके. तो कई बार ये होता है कि द रेजोल्यूशन प्लान विच इज द हाईएस्ट और वट एवर विच वेर दे गेटिंग द money the fastest or it is the highest value, that is given priority to possibly a plan which is coming from a similar industry and which could be better for the interest of the company. But then that is where अगर आप इतनी चीजों को open छोड़ देंगे then there's not going to be a solution to it. So the fact that there are decisions being taken, it's I would say reasonable. I'm not defending it, but वीडियोकॉन का एक इंटरेस्टिंग केस इसलिए था क्योंकि इसमें बहुत सारी होल्डिंग सब्सिडरी, बहुत सारी ग्रुप कंपनीज थी जिसके कॉमन कंट्रोल, कॉमन डायरेक्टर्स, कॉमन एसेट्स, कॉमन लाइबिलिटीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंपनीज, बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत बहुत क्लोजली निट कंपनीज थी. तो इसमें एक ये इंटरेस्टिंग चीज एनसीएलटी ने की जहां उन्होंने 13 कॉर्पोरेट डेटर्स को एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को बोला कि आप इसे रन कीजिए प्रोसेस को. एंड द कंपनी द रेजोल्यूशन प्लान फॉर द सीडी एंड द ग्रुप कंपनीज वर सबमिटेड बाय ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज. इट वाज सक्सेसफुली टेकन. सो So this is an interesting case where पहली बार एक तरह से ग्रुप इंसॉल्वेंसी का एक एस्पेक्ट टच हुआ. You may want to also take a note जो हमने इसमें डिस्कस नहीं किया है क्योंकि it's an ongoing case and again there I am involved. There is a case of Region Infratech and Region Power और I don't get the name but Region Group के दो केसेस हैं जो एनक्लैड चेन्नई में थे. एनक्लैड चेन्नई ने बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर पास किया अभी कुछ महीनों पहले जहां उन्होंने बोला कि ये सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए similar common control of directors, common interest, common interlacing of financing, pooling of resources. Refer the matter back to the NCLT to see how it can be run as a group insolvency. अब ये अलग प्रोसेस प्रॉब्लम है कि उस पर्टिकुलर केस में वन कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज टू द अदर कंपनी एंड दो अलग अलग सीओसी है, दो अलग अलग आरपीस है. तो वो अभी भी दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट एज टू कैन इट बी रन एज a group insolvency or it should be run as two individual two independent insolvencies. So उस पर I've written an article also in the Hindu Business Line, want to read up and see कि is group insolvency a practical aspect in India? It's a point of debate. Let's see how it works. Now let's see IBC in the context of some numbers and data कि इस कानून ने क्या अचीव किया. अगर आप पहले देखेंगे कि 2007-8 से रिकवरी रेट्स ऑफ एवरेज डीआरटी, सरफेसी, लोक अदालत, ये आपको गिरता, यू कैन सी द डिक्लाइन. बेसिकली इट केम टू अ पॉइंट की 10%, 13%. सो दिस वाज अ पीक पीरियड वेयर द बैंक्स वर लिटरली ब्लीडिंग, लिटरली स्ट्रगलिंग. देन कम्स योर आईबीसी. You'll see the color of this particular thing. So IBC started off as a super success, almost 50% recovery. Of course, then there was a drop. 2020-21 में दो रीजन से ड्रॉप हुआ. एक तो ऑब्वियसली एनी न्यू थिंग बिकॉज योर लार्जर इश्यूज गॉट रिजॉल्व इन द फर्स्ट 3-4 years. 2020-21 में कोविड हिट हुआ. फिर 21-22 में अगेन नॉट स्टार्टेड इंप्रूविंग. The average overall recovery is about 30 to 33% in IBC, as we will see. So this is another one important thing that you need to bear in mind कि यू हैव टू बेयर इन माइंड कि पुराने क्या लॉस थे, वो क्या कर रहे थे. और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आईबीसी को देखें, आईबीसी दैट नेगेटिव द वे पीपल समटाइम्स बिल्ड अ नैरेटिव कि नहीं यार ये तो लॉ ऐसे ही है, बेकार है. सो आई दैट इज अ कॉल दैट आई वुड लेट द नंबर्स डू द टॉकिंग एंड द ऑडियंस टू टेक कॉल ऑन दैट. आज एज वी स्टैंड जो लास्ट डेटा अवेलेबल है 30 सितंबर 2023 में, totally I think you can look at this table here. 7,058 companies have been admitted into corporate insolvency. जिसमें से 947 companies का the withdrawal has happened after admission.
वेरी गुड साइन, ये इसलिए एक अच्छा साइन है। अगर आप देखें मोटा मोटी 1,000 कंपनी 7,000 में से मतलब अबाउट 14-13%, द प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि यार कंपनी हमारे हाथ से निकल सकती है, इसे विड्रॉ कर लें 12 में तो बेटर रहेगा, नहीं तो द कंपनी गेट्स ओपन अप फॉर एनीबडी टू अक्वायर एंड गॉड नोज वेयर इट। द प्रमोटर्स हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑन अ कॉन्टेक्स्ट कि हाँ, I may also lose something, and the creditors, the financial creditors, the bankers are at a slightly better status. There are about 1,000 companies in which there was the matters were closed and on appeal, a review, or a settlement, which is again a very good thing. So अगर हम इन दोनों को देखें तो actually 2,000, 1,947 plus 1,053, so I think it comes to exactly somewhere about 2,000 or 2,000, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। 808 प्लान अप्रूव हुए हैं, 20 to 49 ऑर्डर्स लिक्विडेशन के पास हुए हैं, एंड 2,000 केस की इंसॉल्वेंसी चल रही है। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। आई थिंक दिस आईबीसी का ही ओवरऑल रिकवरी पैटर्न है, जहां एडमिटेड क्लेम्स के अगेंस्ट कैसे आपने देखा डिप हुआ था और अब चीजें वापस बेटर हो गई। ये डेटा आपने देखा, आई एम कमिंग बैक टू, ओके आई विल कम बैक टू दैट डेटा अगेन। सेक्टोरल ट्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंपनीज दैट हैव गॉट हिट आर मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर। ये दोनों मिला के ही आपके ऑलमोस्ट यू हैव अबाउट 60% ऑफ द कंपनीज विच आर रनिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी काफी हिट हुआ है, एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर्स लाइक पावर एंड सो सेक्टोरल वाइज भी आप देख सकते हैं कि किन किन सेक्टर्स पे आईबीसी का बहुत असर पड़ा है। नाउ वंस अगेन कमिंग बैक टू द नंबर्स, एंड आई थिंक आई हैव हाँ ये स्लाइड इंटरेस्टिंग है, बट या अगर आप देखें तो वही सेम नंबर्स है 7,058 आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट लिक्विडेशन के अगेंस्ट। जो लोगों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है लिक्विडेशन, यार फिर तो इट्स वेरी नेगेटिव, इट्स वेरी बैड, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट। बट आप रियलाइजेशन अगर आप देखेंगे तो लिक्विडेशन वैल्यू के अगेंस्ट हमें 168% का रिकवरी मिली है, विच इज गुड because you can't do much. You've you've understood where the genesis was somewhere in the past. Realization against the value of claims, it was actually good. It had gone to almost 37, 30, almost 40%. It dropped, but now it's about 32%. And average time taken to complete an insolvency process, if you see, this is the total column. You can possibly ignore this thing and just look at the total column over here. It was 653 days. So here, as lawyers, as you all know, हम बोलते हैं ना, I ask myself a question. So I ask myself a question here, my lords, कि 330 into 2, 660, दो साल के अंदर, आफ्टर ऑल द लिटिगेशन, आफ्टर ऑल स्टेक होल्डर्स बीइंग हर्ड, आपको सोल्यूशन मिल रहा है। गिव मी वन सिमिलर लॉ जहां आपको इस लेवल पे चीजें हुई है, सॉल्यूशंस मिले हैं, और द अमाउंट्स रिकवर्ड। नाउ लेट्स लुक एट दैट। तो 32% की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं। दिस इज अबाउट 3.16 लाख करोड़ अगेंस्ट द एडमिटेड क्लेम्स ऑफ 9.2 लाख करोड़। आईबीबीआई का आप न्यूज़लेटर डाउनलोड कर लें, उसमें सारा ये डेटा अवेलेबल है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट दैट दे कम अप एवरी 3 मंथ्स। द क्वार्टर एंड होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर ये न्यूज़लेटर रिलीज होता है। 3.16 लाख करोड़ का जो रिकवरी है 808 रेजोल्यूशन प्लान में, अगर लिक्विडेशन वैल्यू के अगेंस्ट देखें तो इनके अगेंस्ट लिक्विडेशन वैल्यू 1.87 करोड़ है, फेयर वैल्यू 2.92 करोड़ है। तो एटलीस्ट वी शुड बी, आई वुड से, अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि जो फेयर वैल्यू है एक सर्टेन लेवल की, उसके ऊपर की ही वैल्यूएशन आज आई है रेजोल्यूशन प्लान्स में। सो कमिंग टू लिक्विडेशन, सी लिक्विडेशन इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। दो चीजें हैं, when it's time to die, it's time to die. There's no point, आप कितना भी आप टानिए, आप उसको मतलब artificially you can just keep pumping things, but if a company has to exit business, it has to exit business. As Dr. Sahu, who's the first IBPI chief, somebody who I tremendously respect, who's done some phenomenal work in IBC, वो हमेशा बोलते हैं कि there's something called ease of exit. Ease of doing business एक चीज है, ease of entry एक चीज है, but आप graceful exit भी दे businesses को। और अब तो लिक्विडेशन में भी देर आर वेरियस ऑप्शंस वेयर यू कैन डू लिक्विडेशन बाय वे ऑफ सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ पार्ट बिजनेस, सेल ऑफ कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। यू कैन कम अप विद अ कंप्लीट स्कीम अंडर लिक्विडेशन। सो लिक्विडेशन में भी देर इज एक्चुअली रिकवरी सर कमिंग। ये सब तो हम देख चुके हैं। वन थिंग विच पीपल आर समहाउ नॉट अवेयर इज दैट आउट ऑफ थर्ट एज ऑन 31st August 2022, ये एनसीएलटी की वेबसाइट पे डेटा है, 31,000 केसेस वेर फाइल्ड, out of which 25,000 were closed, 25,800 were closed. 85% का रेशियो है इनका एडजुडिकेशन का। इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ मेंबर्स, टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट मेंबर्स कम होते हैं। अभी आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ मेनी आर देयर, बट आई एम श्योर इट्स नॉट मोर देन, इट्स इन डबल डिजिट फॉर श्योर, इट्स इन डबल डिजिट 60 or 70 so there
हमेशा शॉर्टेज रहती है। तो इमेजिन कीजिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाए, ज्यादा बेंचेस हो जाए, एनसीईआरटी मेंबर्स अपॉइंट हो, आई थिंक दे कैन डू अ लॉट बेटर। 26,000 applications have been withdrawn prior to the admission stage itself, जहां 9.25 लाख करोड़ रुपए वापस सिस्टम में आए हैं। पीपल हैव पेड द क्रेडिटर सेइंग कि नहीं भैया हमको इंसॉल्वेंसी में जाना ही नहीं। तो अगर आप इसको देखें, 9.33 लाख करोड़ हियर प्लस 3.16 लाख करोड़ हियर, करीबन 12.5 लाख करोड़ रुपए आपको एक कानून के चलते सिस्टम में वापस आया है। जब आप बोलते हैं सिस्टम, मतलब क्रेडिटर, ड्यू क्रेडिटर्स, और ज्यादातर फाइनेंशियल, बट ये 9.33 ऑल्सो इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ ऑपरेशन क्रेडिटर्स। एंड इट ऑब्वियसली गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट कि जब वो पैसा सिस्टम में वापस आता है तो ऑब्वियसली मोर बिजनेस, मोर इकोनॉमी, मोर एवरीथिंग गेट्स बेटर। सो द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज, it's not as bad as sometimes it's made to sound. IIM Ahmedabad did a study on, how are the companies जिनकी resolution process हो चुकी है, how are they doing, and some very interesting results came up. This report is available in public domain. आप इसको go through कर सकते हैं. Average sales went up. अभी the numbers are there. They did well in various parameters. सबसे अच्छी बात है कि employee expenditure went up by 50%, which means आप समझ सकते हैं कि आईबीसी से कंपनी को जब रिवाइव करते हैं तो उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना अच्छा पड़ता है। एम्प्लॉयज आर गेटिंग द जॉब और एम्प्लॉयज को कंटिन्यूटी मिलती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैलेंस शीट्स आर गेटिंग बेटर क्योंकि एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। ये नहीं है कि सिर्फ आप पेपर पे इन्फ्लेट कर रहे हैं चीजों को, इन्वेंट्री बढ़ा रहे हैं और कैपेक्स नहीं हो रहा है। लिस्टेड कंपनीज हैव डन फिनोमिनली वेल। 2 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप हुआ है, जो जो कंपनी लिस्टेड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में रन हुई है। लेकिन अब देखते हैं कि हाउ हैज दिस लॉ पैंड आउट अगेंस्ट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। आई थिंक जस्ट बिफोर दैट, केशव जी, आई थिंक आई हैव हम 10 minutes more. So actually, you have the floor absolutely to yourself. It's really enlightening. So please, you continue as per yourself No, no, because I don't want to we hold have people some on a Sunday. questions which we'll take up towards the end. People have, yeah, but you हाँ, take I your don't time want. because what you're telling us is actually very fantastic and very relevant. So I'll not want to interrupt you. ठीक है, आई विल ट्राई टू रैप अप इन 10 minutes. गिव मी अ मैक्सिमम 5 minute ग्रेस, क्योंकि ऐसे तो आई कैन गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 45 minutes, बट 15 minute इज माई हायर साइड, बट आई विल राइट। Yeah, yeah, please, you take your time. ओके, सो अब इस देखते हैं कि ये सब तो हो गया आपका परफॉर्मेंस कि हाँ ठीक है, कानून बहुत अच्छा, मतलब एक ऑन पेपर डेटा शोज की हाँ चीजें दोनों तरीके से देख सकते हैं। आप इसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, 32% इज वेरी लेस। आई मीन, यू गिव मी एन ऑल्टरनेटिव, लेट मी सी, देन आई बी हैप्पी टू डिबेट। नॉट दैट आई एम नॉट द वन हुज कम अप विद द लॉ, लेकिन जितनी मेरी समझ है, लिमिटेड समझ, और जितना मैंने देखा है, चैलेंजेस है लॉ में, कहाँ कहाँ मिसयूज हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस टुवर्ड्स द एंड। सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर, जिसे हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ द फोर्ट्रेस, ये दीज आर थीम्स आई हैव टेकन फ्रॉम माय बुक, फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी, मेरी जो बुक है डिफॉल्टर्स पैराडाइज लॉ, जहां मैंने आईबीसी को एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश की है, जहां हर स्टेक होल्डर पे इस कानून का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इम्पैक्ट हुआ है। सो फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है हु डिसबर्सिंग सम फाइनेंशियल डेट अगेंस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर की स्टैंडिंग ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांग है, हायर पोजीशन पर है, क्योंकि उनके पास कंपनी का एसेट सिक्योर्ड है। ट्रिगर सेक्शंस आर स्ट्रांग। सेक्शन 7, आपके पास बहुत लिमिटेड डिफेंस होते हैं कंपनी के पास टू सेव अ सेक्शन 7। वो टिपिकल डिफेंसेस लिए जाते हैं कि इट इज डॉक्यूमेंट्स आर नॉट प्रॉपर, और डेट ऑफ डिफॉल्ट इज रॉन्ग, सिग्नेटरी गलत है, लिमिटेशन पार्ट है। बट बाय एंड लार्ज अगर एक सेक्शन 7 फाइल हो रहा है, यानी कि फाइनेंशियल क्रेडिटर जब आपके अगेंस्ट फाइल कर रहा है, बैंक एंड बीएफसी, जो चांसेस आर नॉट सो गुड टू सस्टेन थ्रू दैट एप्लीकेशन, और हमें बहुत तकलीफ होती है व्हेन वी आर दी कॉर्पोरेट डेटा। एनसीएलटी डिस्क्रिशन एक्चुअली ज्यादा नहीं है एनसीएलटी के पास। यू वेरी क्लियर कि देखिए, अगर डेट और डिफॉल्ट है, आपको एडमिट करना होगा। बीच में एक जजमेंट आया था विदर्भा इंडस्ट्रीज का, जिसने एक ट्रेंड स्टार्ट किया कि नई एनसीएलटी के पास प्रेरोगेटिव है या डिस्क्रिशन है कि वो केस टू केस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। विदर्भा इंडस्ट्रीज में अगर आप लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे कि उसकी फाइंडिंग बहुत क्लियर थी। जो क्लेम फाइल, जो बैंक का क्लेम था सेक्शन 7 का, उससे ज्यादा का अगर अवार्ड कंपनी के पास है, विच इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कंफर्म्ड, और जिस पे लिटिगेशन चल रहा है, there's a high possibility that the award will get confirmed and the company will get that money, then the NCLT can use discretion, but not that. That was, to some extent, it was kind of misused by several corporate data. I won't not use the word misuse because lawyers, मैंने खुद उस judgment को काफी I've relied on that judgment to say नहीं, I have a hope, I have an order from Aptel, I have an order from so and so, but ultimately again the law went back to ultimately innovative industries and Suresh Kumar, which says कि नहीं, सेक्शन 7 डेट है, डिफॉल्ट है, आपको एडमिट करना।
Post admission of the company to insolvency, financial creditors, they obviously form part, they become the committee of creditors. See, committee of creditors एक तरह से देखा जाए तो it's a slightly different avatar of board of directors. It's just that they don't take day to day managerial decisions. वो कंपनी के या तो existing staff ही continue करते हैं, या ये लोग कुछ consultants को hire करते हैं, या sometimes management is supporting, or whatever the case may be. They run the resolution process. उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस इन्फ्लुएंस होती है. कई बार इनके खुद के इंटरनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं सीओसी के, कि मेरा क्लेम कमती एडमिट हुआ है इसलिए मेरा परसेंटेज इन द सीओसी इज लेस. So there's always a clash of smaller versus the larger committee of creditors, the member of COC. There's a lot of inter COC litigation that goes on as well. So that's one aspect which जो है सो है, because ये public money है तो obviously बैंक के ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि आई विल आस्क फॉर द मैक्सिमम. सो या, unsecured financial creditors generally are NBFCs, individual lenders. Sometimes even banks are unsecured अगर obviously security interest नहीं है. waterfall mechanism में इनको थोड़ा नीचे एक स्टेटस दिया गया है, फोर्थ लेवल पे इनको लाया गया है. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआर शील के केस में, it allows a differential treatment if it is equitable between on reasonable grounds, if it is a secured versus unsecured. So that's kind of clear. लीगल चैलेंजेस इनके ये होते हैं कि जो रेजोल्यूशन प्लान्स कई बार सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इनका से शायद थोड़ा कमती होता है सीओसी में. सो द स्ट्रेंथ इज नॉट एज गुड एज द सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. कई बार ये भी होता है कि इंडिविजुअल लेंडर्स हैव लेंड और अनऑर्गेनाइज्ड हैं, दे कांट कम टुगेदर, दे आर नॉट मीटिंग द 1 crore थ्रेशोल्ड जो चेंज कर दिया गया कोविड के टाइम पे, 1 लाख से 1 करोड़ को किया गया था थ्रेशोल्ड. But again, there's a judgment of Vishnu Mills Union of India which says कि a group of FCs can converge to file a joint Section 7 to cross the 1 crore threshold. It was a if I'm not wrong, a Rajasthan High Court judgment. So uh, that's in terms of at least for them to put together a case and file it. Uh, yeah, I think weaknesses we've already discussed. थोड़े इनकी पोजीशन थोड़ी रिलेटिवली वीक होती है. एम्प्लॉय बिंग द नर्व सेंटर, एम्प्लॉय का सबसे बड़ा देखिए चैलेंज ये होता है कि pre-insolvency for them, the promoter is God. Promoter has obviously given them the bread and butter and all that. Now, उनके लिए उनके माइंड एक तो एम्प्लॉय और वर्कमैन तक सारी इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होती है. और कई बार इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एंड वी ऑलवेज एडवाइज दिस टू आवर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, कि आप कंपनी के एम्प्लॉयज और वर्कमैन को थोड़ा समय लगेगा इनिशियली, बट टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस. उनके माइंड में ये मत रखिए कि एडवर्सेरियल ये इंसान तो हमारा दुश्मन है, या ये इंसान तो हमारे बॉस की जगह आके बैठ गया एंड ही इज गोइंग टू kill the company or make the company insolvent. क्योंकि एक जब हम लोग a well educated businessman itself finds it difficult to understand so many nitty-gritties of this law. I think it's only fair that enough, I would say, awareness has to be given at the bottom ground level on to the workman and the employee to say, सर ये हम आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपको इसमें you will be the one who will be benefiting, क्योंकि as per the waterfall mechanism, the workman and employee dues of the past 12 months and 24 months respectively have to be paid on top priority. All of that is there. So sensitive employee handling is something which is very important. और इस पे थोड़ा काम होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय बेचारे वो एक उनके लिए दुविधा होती है, मैं किसकी बात सुनूं, मैं अपने पुराने प्रमोटर की बात सुनूं या अभी जो ये आरपी रन कर रहा है शो इनकी बात सुनूं. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसे हम एंकर बोलते हैं, दे आर वेरी की स्टेक होल्डर. आई गेव द कॉन्टेक्स्ट अर्लियर कि कौन बन सकते हैं क्या है. देखिए, इनको कंपनी को डोंट एक्सपेक्ट देम टू टर्न अराउंड द कंपनी. ये बिजनेसमैन नहीं है, इनको स्टील और पावर और शिपिंग और इस सेक्टर, दे डोंट नो दिस सेक्टर, एनी सेक्टर फॉर दैट. they may be knowledgeable, but they are not business. They are supposed to run all this जो आपके सामने है. Calling for paper publication, commencement of the process, calling for claims, verifying the claims, collating the claims, forming the COC, calling the COC meetings, recording what is being discussed in the COC, calling resolution applicant, negotiating with the resolution applicant on behalf of the COC, getting them to interact with each other, ensuring that the resolution applicant that comes, it meets the eligibility criteria which is there in IBC, and to finally ensure that a successful resolution plan is approved or the company moves to liquidation. तो ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का दायरा होता है काम करने का. और उनके ऊपर ऑब्वियसली आईबीबी है देयर एज अ रेगुलेटरी बॉडी. होम बायर्स का हमने देखा है, सो आई विल नॉट गेट टू मच इनटू इट. दे आर एंड ऑफ द डे दे आर financial creditor, and they do have their own, I would say, standing in the process, which was initially not there.
2018 में उनको कैटेगराइज कर दिया गया था एज फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. Operation creators, I've always said I have my sympathies for them because I have a lot of. I feel bad, especially जब both cases when our clients with operation creditors, जब उनका क्लेम एक्सेप्ट तो हो जाता है, दे आर हैप्पी, बट जब अल्टीमेटली जब रेजोल्यूशन प्लान आता है जहाँ उनको 5 या 10 या 15% मिलता है या कभी उससे भी कम, it's a little sad. At the same time, when we are vetting plans also, it's become the mindset of the resolution applicant, or it's become the mindset of people involved in the ecosystem कि ऑपरेशन क्रेडिटर्स को तो इट्स ओके, वी कैन गिव देम अ स्मॉल थिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये वही लोग हैं जिन्होंने मटेरियल सप्लाई किया है गुड फेथ पे और आगे भी आपको सपोर्ट करेंगे. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट देयर पोजीशन इज improved. I've spoken enough about this, but yeah, they have a lot of challenges. इनफैक्ट कई जगह तो ये है कि इनके पेपर वर्क इतने पुअर होते हैं, दे देयर क्लेम्स आर बार्ड बाय लिमिटेशन, देयर it's the documentation is kind of all over the place. Now, how do you expect a trader to have proper documentation and so on and so forth? Guarantors दोनों लेवल पे होते हैं, कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटर्स, दोनों के अगेंस्ट केसेस ऑफ फाइल हो सकते हैं. कॉर्पोरेट गारंटर इज जस्ट लाइक अनदर CIRP दैट गेट्स रन थ्रू, एंड सेक्शन 128 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत क्लियर है, वैसे भी को एक्सटेंसिव लाइबिलिटी है. ये अलग बात है कि ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है कि अगर आपने इनिशिएट किया प्रिंसिपल बोरोवर के अगेंस्ट और आपने बिफोर दैट प्रोसीडिंग गेट्स ओवर आपने कॉर्पोरेट गारंटर के भी अगेंस्ट अगर इनिशिएट कर दिया, तो हाउ डू यू मैनेज दीज टू इंसॉल्वेंसीज? क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल बोरोवर की इंसॉल्वेंसी में आपका पूरा ड्यू मिल जाता है, तो कॉर्पोरेट गारंटर की इंसॉल्वेंसी में आप जो ले रहे हो वो एक्स्ट्रा है. ये रियलिटी ये है कि मोस्टली डजंट हैपन, बट देन these are some practical things which come into play. So but then a lot of times COC members are common, they know. Then ये भी होता है कि रेजोल्यूशन प्लान इज गिवन फॉर द बोरोवर एंड द गारंटर, और दो रेजोल्यूशन प्लान्स दिए जाते हैं. सो बट देन दीज आर slight tricky and gray areas which still need some fine tuning, and uh, those aspects will have to be seen. So the Supreme Court with respect to the personal guarantor, ये 2019 सितंबर दिसंबर में आ गया था, बट ऑब्वियसली कोविड केम इन, so 2020-21 आपका वैसे चला गया. देन देयर वाज दिस 2 times constitutional validity were challenged of personal guarantor insolvency, and the Supreme Court has said it's absolutely valid and there is no difficulty there. So we will see a lot of action in this particular space soon. Resolution applicants, उनके बारे में काफी कुछ है, who they are, what they do, and I think I've already spoken about it. Their entry point, they need to be qualified, they need to be, I would say, eligible. उनका ऑब्जेक्टिव क्या है एक्वायर करने का? देखिए, एक रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज बेसिकली दो कैटेगरी में मान के चलिए. या तो इट्स अ प्योर फाइनेंशियल फंड जो आ रहा है कंपनी को एक्वायर कर रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव है टर्न अराउंड करके 3 से 5 साल में कंपनी को वापस किसी और पोटेंशियल सेल कर देना, हो वट एवर इट इज. दो दैट्स नॉट इलीगल, बट दैट्स नॉट व्हाट द इंटेंट. इंटेंट ये है कि जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल टाटा टेकिंग ऑन भूषण इज अ गुड एग्जांपल. सेम इंडस्ट्री, a more, I would say, a good management experience and reputed management comes in, takes a company which is in distress and has revived that company. So इनके अपने challenges होते हैं, unknown challenges, unknown claims. Yes, we've discussed about it. But the good thing is, time and again, Supreme Court has said that once a resolution plan is approved, binding on all stakeholders. But at a very practical level, ये भी है कि एक resolution applicant को भी मालूम है कि when I'm acquiring a company, I am earmarking a small X amount in addition to the resolution plan to ensure that I may have to litigate a bit more and things of that nature. Committee of creditors, we have seen they are the ones who, based on the claims that they make and the claims that are admitted, they get a voting percentage in the COC. They are the decision making authority. रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करना या लिक्विडेशन में कंपनी को मूव करना, ये COC ही करती है. तो इनका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है. द RP, द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, facilitates or takes those actions but doesn't take the decision per se. So commercial wisdom इनका important. A lot of, as I've already said, there are disputes with respect to their own litigations and all. That happens. Interstate disputes can lead to litigation. We've seen this. कई बार होता है कि एक साल तक तो ये लोग खुद ही लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के बीच में कि किसका वोटिंग शेयर सबसे हाई है. So that time is lost. But I think as the law will evolve, say 6 to 7 years, and we still have so much to talk already. And I'm just scratching the surface. It's the tip of the iceberg. If we start getting deep, may have to do a couple of days of a workshop. So some of the major challenges and impact on IBC I've discussed this. Weak position of operation creditors, COC sometimes failing to act responsibility and exercising actual commercial wisdom, preference on recovery,
rather than resolution. Sometimes misuse of the law by creditors to shortcut and bypass other remedies and कि उनको पैसा मिल जाए, using it as a money recovery tool. Difficulties faced even by viable companies when multiple creditors file cases together. ये होता है कि एक कंपनी के एक साथ चार पांच क्रेडिटर्स ने केस फाइल कर दिया तो अच्छी खासी कंपनी को भी चैलेंजेस आ जाते हैं एंड दे मे बी एडमिटेड इनटू इंसॉल्वेंसी. सो लॉ का कहीं ना कहीं मिसयूज वहां होता है. Challenges and limitations faced by the insolvency professionals at various stages, and promoter mindset, the promoter's expertise. I mean, it's a huge, that can be a subject for another day. But promoter vis-a-vis IBC, because Indian promoters is very emotionally attached to the business. They're not wrong also. दो तीन generation उन्होंने build किया है business को. For some reason it has gone bad. But this is where I think now it's the time where the courts will have to start. I think I would say uh, over the next few years, uh, I would say bifurcating or saying कि हाँ genuine defaults, genuine challenges vis-a-vis chronic constant defaulters जिनका एक pattern रहा है, तो as they say एक उसको differentiate करना over the next few years is going to be important, so that if there's a genuine promoter they can be given some benefit of doubt vis-a-vis a promoter who has been a chronic defaulter or who has a pattern कि हाँ ये तो इन्होंने लोन लिया है और हर केस में ही इन्होंने डिफॉल्ट किया है. So those are some challenges. Journey of the law of IBC. I will not take too much time with 3-4 minutes just because that this I think the presentation would be any which way shared. I'll be happy to. How the law, what was a dispute initially? Was itself a point of dispute? कि dispute इंसॉल्व जो ऑपरेशन क्रेडिटर के केस में dispute क्या है? That was decided. How do cases, like in Unigreen it was to be said that if a debt and default is decided, application is complete, CD is not barred. You have to kind of admit the case. Innovative Industries, Supreme Court ने पहली बार दिया कि where debt and default is enough. Videocon, we have seen group insolvency. Pioneer Urban is when the home buyers were treated as financial creditors. Jignesh has an important judgment which brought in the concept of limitation law into IBC. Jet Airways, we saw cross-border insolvency. SR Steel is a beautiful judgment in itself. Entire IBC has been analyzed. There are too many things. I think I won't be justifying by just mentioning 4 points or 3 points. रमेश कायमा's judgment I think was something which is interesting. जो भी एक साल का सस्पेंशन आया कोविड के टाइम पे कि आईबीसी आप कंपनीज को इंसॉल्वेंसी में नहीं डालेंगे, that subject still haunts. Maybe I'll be happy to listen from you all. आप लोग का क्या पर्सपेक्टिव है? अगर आप 10 कैपिटल ए का लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें द वर्ड एवर है. For defaults done between 25/3/2020 to 25/3/2021, no section, no application of the section 7, 9, and 10 shall ever be filed against a corporate debtor. Does it mean that अगर इस पीरियड का डिफॉल्ट है, इट्स अ परमानेंट इम्यूनिटी और कभी जिंदगी में आप इंसॉल्वेंसी फाइल नहीं कर सकते हैं? इन विच केस आई वुड call upon you to go and look up the recent India, not recent judgment, but the India Bulls case of NCLAT, जहां ये कहा जाता है कि अगर कोविड डिफॉल्ट भी है लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स फिर से ड्यू हुए हैं और फिर से अगर उन्होंने डिफॉल्ट किया है तो कैन यू गो बिहाइंड देम? इनडायरेक्टली इट सेज दैट. सो प्लीज लुक एट that particular aspect. The ES Krishnamurthy case is again where NCLT came back to the original standing saying that सेक्शन 7 को आप डिसमिस नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग द मेरिट्स एंड डिटरमिनिंग द जस्ट एंड इक्विटेबल. एंड आप सेटलमेंट्स को कंपेल नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट फोर्स पार्टीज टू सेटल, यू कैन नॉट फोर्स क्रेडिटर्स टू सेटल. ट्यूलिप स्टार इज एन इंटरेस्टिंग केस विच सेज अगर बैलेंस शीट में अगर एंट्री है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, so that's good enough for the limitation purposes. So this is an interesting case which is always used wherever there is no clear cut acceptance of liability, जहां अगर बैलेंस शीट of the companies does a lot to speak. So आप देख रहे हैं कि कैसे चीजें एक तरह से फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में सही रिकॉर्डिंग्स होना, कॉर्पोरेट लॉ, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट एथिक्स, ऑल ऑफ दिस इज काइंड ऑफ गेटिंग ऑल, हम देखेंगे कहीं ना कहीं कन्वर्ज होता है. विदर्भा इंडस्ट्रीज इज वेयर द केस फॉर सम टाइम इट्स सेड एक मे और शैल का इंटरप्रिटेशन था. द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट इज विदर्भा इंडस्ट्रीज इज नॉट टुडे द लॉ ऑफ द लैंड. रेनबो पेपर्स में एक नया कंफ्यूजन आया था कि गवर्नमेंट ड्यूज को आप कैसे ट्रीट करेंगे, सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर के स्टेटस पे ट्रीट करेंगे. बट इन दैट केस द गुजरात वैट had a particular provision कि it has to be treated if there is a default, that the amount in default has to be treated as a secured credit, and automatically the provision of law allows the particular department to be treated as a secured creditor I would say. But then again, that has further been clarified, and there has been a review, and there have been other judgments which say no, it is an operational debt, and there are government debt plus section 53 mein there is a
discussion that is, or there is a specific space in the waterfall mechanism. So that's Suresh Reddy's again, which brings the court, the NC, the IBC back to where it started. Ki debt default admission. आप उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे. So what have been our learnings? It's been an earlier regimes were not so helpful, not so effective. Uh, New regimes through the introduction of IBC, it's a consolidated piece of legislation. Time bound manner में resolutions हो रहे हैं, law evolve हुआ है, data दिखाता है कि रिकवरी बहुत हाई थी, ड्रॉप हुई, अब वापस बढ़ रही है. कुछ इंटरेस्टिंग लैंडमार्क केसेस हैं, स्टडीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन थैंकफुली. चैलेंजेस अभी भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पॉसिबली वी कैन डिस्कस ऑन अनदर डेट. आई थिंक आने वाले समय में आप देखेंगे कि ग्रुप इंसॉल्वेंसी, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी और प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी को भी नॉन एमएसएमईज के लिए हम कैसे, आई थिंक द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी प्रपोजिंग और इज ऑलरेडी हैज समथिंग प्लान टू एक्सटेंड प्री पैक इंसॉल्वेंसी फॉर नॉन एमएसएमईज. बिकॉज देखिए, प्री पैक इंसॉल्वेंसी एक कॉन्सेप्ट है जहां द कॉर्पोरेट डेटर विच इज इन डिफॉल्ट itself comes up with a resolution plan with the support of 66% financial creditors who are not related to the corporate debtor. प्रैक्टिकल लेवल पे चैलेंज ये आता है where a lot of companies have told us, where we have observed, why don't you try pre-pack? Sir, banks don't agree. Banks have their concern, यार हम इतना haircut अभी कैसे लें? Let the whole process run और उसके बाद ultimately when there's going to be no competitive bid, then we are happy to take it. But just for that concern of the bank, the process is run for 2 years. But the अगर आप बैंक का perspective से सोचे, there were some officers or there were some cases where in the past, आज से कुछ साल पहले, where banks took decisions. They gave certain, restructurings and one-time settlements to certain companies. But then they came under the scanner of, I would say, the investigative authorities कि आपने कैसे दे दिया itna waiver. So it's the pre-packaged insolvency concept is good, but the mindset of the banker vis-a-vis the promoter, this all has to be aligned with time. Personal guarantor insolvency, maybe we are going to see a lot of evolution to in the times to come. I think that's about it. Thank you, and I think I have. Okay, no, I shot up by far another 5 minutes, but yeah, thank you so much. Absolutely a pleasure, and thank you, Vestralex, for the opportunity. So yes, and shoot. Anandji, first of all, I want to congratulate you because I understand that if anyone ever asks me for any one particular session of learning the IBC, then I think this is the most comprehensive that I can, very confidently refer to anyone for that matter of fact. Be Thank it a you. lawyer, be it a person who's running a company, a business, be it a person who's an IRP or an RP, or a person who's wanting to be in any manner related to the IBC and its processes. So again, since first of all, we're very grateful to you for giving us more time than what we had sought from you. So I'll not go into a lot of questions of my own. I'll immediately just ask the question that have come up to be taken up with you. So we have a question from Krinjal Ahuja ji. Krinjal ji, आप अपना सवाल पूछना चाहेंगे आप? ऑलराइट, तो मैं इनका सवाल लेता हूँ. ये पूछते हैं कि in case wherein there are multiple applications of various creditors, can IRP press the bench to approve the resolution plan without hearing all creditors? The question is not very clear. I think Pranjalji can explain, but let me, I think, if there are multiple applications by various creditors, are these creditors who have reached out to the NCLT and filed applications for partial acceptance or rejection of claims? अगर वो मैटर पेंडिंग है कि हाँ claims partial admission या rejection है, then the bench, as a practice, the bench will not go ahead with approving the resolution plan without taking a decision on those admission of claim issues. क्योंकि अगर कई लोगों के claim बढ़ गए या घट गए, that has to be factored into the resolution plan. So if the IRP is trying to press, first of all, or it has to be the RP by the, if in trying to press कि नहीं आप पहले resolution plan approve कर दीजिए, तो फिर तो ये सारे application infructuous हो जाते हैं. So I think if that's what the question is, unless the question is something different, then please feel free to unmute and ask. Krinjal ji, you have the opportunity right now. You want to ask?
All right. So इन्हीं का एक और क्वेश्चन है. I'll just इनके कुछ very interested they are. So a few other questions. I'll just take one more of theirs. इन्होंने पूछा है nowadays there is a lot of dispute in RP IRP fees which is due to them. Due to which applications are getting delayed. Can you kindly share some light on this? हाँ, तो IRP fees ही think is very clear, sir. As frank as I've been and I'll continue to be, the regulations under CIRP regulations make it very clear. I don't remember the regulation number, but it says very clear that the applicant will be liable towards the initiation of CIRP expenses, which includes the fees of the IRP. तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं या फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, इनिशियली जो आईआरपी की फीस लगेगी, जो आज के दिन बेंचमार्क कुड बी समवेयर बिटवीन whatever, I will not get into numbers. That is to be paid by the initiating person of the insolvency process. It could be financial creditors का तो क्या है कि उनका obviously stakes are so high and they have a panel of IRPs on. ऑपरेशन क्रेडिटर को थोड़ा ये पिंच करता है क्योंकि अगर एक 1.5 करोड़ का ही क्लेम है, उसमें एक्स अमाउंट हैज बीन आस्क्ड, वो तो अब तो थिंग्स आर स्टिल बेटर. इमेजिन व्हेन द थ्रेशोल्ड वाज 1 लाख टू इनिशिएट. 1 लाख आप इनिशिएट आपने किया, आपका टोटल केस बनता था. देयर आर पीपल हु इनिशिएटेड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स फॉर 8 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, and the IRP fee has been an X amount, a couple of lakhs or whatever it is. They would not pay, and where would the IRP go? It used to be very embarrassing that the IRP is coming to the NCLT filing an application के साथ मेरा फीस नहीं. So yeah, there is a provision to that extent. So once the COC is formed, it is the COC's responsibility to ensure that the IRP is paid. That is where it is important. If it is a going concern कि कुछ पैसा आ रहा है, the game is very different. The point is, these are hard facts which people tend to just हाँ ठीक है थोड़ा leave it at a surface level. If it is a going concern, money is coming in, nobody complains. They happily the process runs, the RP is paid, the lawyers are paid, everyone is paid. But if it is a company which is in a dead asset situation where there is no inflow of funds, where some interim financing is required, where the banks are pumping in some funds, or whatever, then it becomes a bit of a challenge. Even the RP sometimes, they are paid towards the end, they get, there are challenges. But then IPs also take a lot of support from IP entities and all of that. वो कभी कभी controversial subject बन जाता है कि their fees is high, so on and so forth. But the long and short of it is, yes, if you've initiated, you have to bear the initial expenses, including the newspaper publication. It's very nice that you've highlighted that the pre current threshold. So I remember advising people, operational creditors more so to say, जो 10 लाख रुपए का क्लेम लेकर आ जाते थे and the thought was कि हमें इसमें NCLT जाना है. तो उनको समझाना कि सबसे पहले तुम ये देख लो तुम्हें मिलेगा कितना है इसके अंदर वापस. Just have that thought first and then what are the kind of cost that you'll have to pay. But again, obviously that's changed. So now there is this question from Mr. Sanvay. Sanvay ji, do you want to ask your question? Yes, yes. Can you hear me, sir? Yes, please. Hello. Yes, my question is regarding home buyer. If there is an existence of arbitration clause in an agreement for sale, but none of the parties have issued any notice under Section 21 of the Arbitration and Conciliation Act, will that CIRP process be maintainable before the NCLT? I have gone through the Mobilogs versus Kirusa case, but that is a Section 8 creditors case. So that is why I am asking, sir. No, so I need more clarity. You have not Yes. initiated the arbitration proceeding, but you want to initiate a Section 7 or whatever, some proceeding in the NCLT. Yes, yes. In I spite have of there already. being, Yes, sir. I have already what? You already have a Arbitration clause in the agreement for sale. ठीक है. So the arbitration clause. Go ahead, please complete. Yes, but nobody has initiated the Section 21 notice upon any of them, upon the other party. But one party is willing to initiate, the financial creditor is willing to initiate the CIRP. So So let me can here it be? clarify. Yeah, here let me clarify two, three larger issues. पहली बात, mere existence of an arbitration clause, whether it is in a home buyer agreement, sale agreement, or in any operation creditor, does not, or for any agreement for that, does not automatically make it कि it has to first go through arbitration only, because arbitration का एक objective अलग है, वो कानून का objective is to resolve contractual disputes between the parties and ultimately give a finding. IBC's objective is very clear. It's a resolution of a distressed company.
So number one, yes, it can be initiated, but then you will have to also please see the subsequent amendments that have come by, where if you were to initiate an insolvency proceeding against a builder, it should be at least 100 allottees of a particular project or 10% allottees of that project who can together initiate. You as Yes, a that. sole, you as a sole allottee, we will find it, we cannot basically initiate. As a matter of fact, Sanjay, from what I understand, is that it's a very technical question that you're asking. So I'm assuming that it is with respect to some facts of something that you're currently seeing. So if that is the Yes. case, I think it will be best अगर आप वो जो कागज जो है आपके वो exactly आप discuss करें अनंत जी के साथ. So his contacts are available. Otherwise, also if you want, you can get in touch. We can share the details with you. We can have that discussion. But I think क्योंकि it's a very technical thing that you're asking with, and it's more or less based on documents. So I'll suggest that you get in touch and you have that discussion yourself. Yes. Yes. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Sanjay. Thank It you. was a Thank very you. enlightening question actually. So apart from that, Anandji, again, so a lot of thank yous also which are coming your way. But I think just one or two questions on the very basic level that I just want to ask before we close this class today. So you've taken us through the entire ambit of this very interesting law and through all the nitty-gritties of it. But one thing, if I may ask you, towards the end of it, through your deep analysis, who do you think and who do you say this law is actually there to benefit? Is actually there to benefit. Yes. Undoubted financial creditor. All right. Absolutely the financial creditor, especially if it is a secured financial creditor. See, the law was supposed to give equal importance also to distressed companies to ensure that revival and resolution happens. But अभी तक जो हमने देखा है क्योंकि focus has been on recovery and the mindset has been of recovery for the financial creditors. And if you read the Swiss Ribbons judgment, the constitutional validity when it was challenged, तो आपको एक समझ में आएगा कि एक तरह से वहां भी informal blessing है कि हाँ, this law is for the financial creditors of this country. Thank you so much. So now where this leads to is another thought that as far as the home buyer is concerned, as again, so there are a lot of home buyers today, I believe, that who are having to address and learn more about the IBC today. So how is the home buyer placed as a class of creditor in this? Does he actually stand something to gain? I will break this into two questions. How is the home buyer placed? And does the home buyer actually gain something? Because they're two different things, and when because the answers might be diametrically opposite. The home buyer जो होता है उसको फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस है. आज के दिन उनका से है. वो अपनी वोटिंग परसेंटेज उनको मिलती है उनकी जो भी क्लेम के बेसिस पर. उनका एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रोसेस में है. अगेन टेक्निकल पार्ट है where maybe we can have one time a session dedicated for the home buyer segment because वो बहुत बड़ा challenge है और उनको जानना भी जरूरी है because they shouldn't be taken for a ride as it is poor thing that they have already उनका जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो ऑलरेडी लगी हुई है स्टेक पर. ऊपर से उनको प्रोसेस में भी been taken for a ride. It's unfortunate but yes, फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्टेटस उनको दिया जाता है. So that's one part. Does the home buyer gain out of it? To a large extent I would say it's a double-edged sword. सम केसेस दे हैव डेफिनेटली गेन. क्या होता है कि एक नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट आता है, या तो आपको आपके पैसे वापस दे देता है होम बायर को, या फिर कुछ एडिशनल, सपोज आपने अपना अपार्टमेंट बुक किया 6,000 रुपए स्क्वायर फीट में, वो आपसे 600 800 1000 रुपए स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा लेगा, विच इज इक्वल टू, आप उसको हेयर कट के एंगल से समझ लीजिए, वो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी, दैट योर लक वाज बैड, यू एंडेड अप विद अ डिस्ट्रेस प्रोजेक्ट. That will be the additional amount that this the new acquirer will take, new builder will take, and complete the project and give it. तो ये एक अच्छा तरीका है. दिस इज अ गुड, एटलीस्ट आपको आपका फ्लैट तो मिला, ठीक है, यू पेड 15-20% एक्स्ट्रा, यू गॉट इट. लेकिन इसका फ्लिप साइड ये है, अगर आप रेरा में जाके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रेरा में भी देर आर प्रोविजंस ऑफ project insolvency, project wise, the home buyers, if a certain percentage of home buyers or allottees come together, they can come and file an application in the RERA and say okay, we will complete the project if the builder is not cooperating. So then why do you want to expose yourself to challenge? Home buyer versus home buyer नहीं आता. चैलेंज आता है एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बैंक, एआरसी, ये जो बड़े बड़े जो जायंट्स होते हैं, उनका और होम बायर का. तो अगर आप होम बायर अपने में ही एक एक सोल्यूशन के साथ जा सकते हैं रेरा में, देन आई थिंक इफ यू कैन अवॉइड दी आईबीसी, दैट वुड बी अ गुड बेट. और अब धीरे धीरे एनसीएलटी सब ऑल्सो, नॉट धीरे, इनफैक्ट
constantly NCLTs, and I'm arguing a case in a Delhi NCLT on this issue. They are strongly now supporting project wise insolvency. कि आप एक पूरे एक कंपनी, अगर एक बड़ी कंपनी है जिसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो इंसॉल्वेंसी में जाते हैं, 10 प्रोजेक्ट में सपोज 2000 होम बायर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप सबको क्यों उसको व्हाई डू यू पुट एवरीबडी थ्रू? अगर उसमें से 2 प्रोजेक्ट ही डिस्ट्रेस में है, possibly look at only those 2 in the insolvency process, keep the remaining 8 out of it. So yes, so project wise insolvencies also have, but that's what I gave 2 answers. They have a status. If they can find a solution outside IBC, they should explore that before getting into IBC. So very, very interesting that we have this conversation. So very recently, also I got this opportunity of representing individual home buyer in one such proceeding before the NCLAT. So there the locus standi of RERA was discussed, whether if RERA can challenge the uh, the entire CIRP, the order with which it was initiated. So the Honorable NCLAT decided that yes, absolutely, RERA has the locus standi, it has the authority to file appeals, and obviously whatever may be the merit of the appeal may be decided upon filing that appeal. And also, what came out very well in that was that it was found that the CIRP was not initiated as per how it should have been, or what exactly is the ethics and the code of the morals behind the act, and it was set aside. So I'll share that. I'll share that with you. Probably I think very interesting discussion. I'm aware of it. That judgment is already making news. Yeah. So I'm aware of that judgment. So Locus standi of Ferreira in questioning an initiation of CIR. So I'm aware of the it. fortune of participating in that. So again, so now another question which I think which someone had mentioned, which comes into the picture. I think you had only mentioned it. That what about people who have somehow forgotten or have not been updated that they need to file their claims, and they belatedly file their claim with the RP or with the COC? It depends on how belated is it. पहले देखे तो पहले जब law था, जब regulations आए थे, they used to say the claim can be filed until the approval of the resolution plan by the COC or by the NCLT. Then there came a time period of 90 days. So, or vice versa. I'm not able to exactly which one was. So 90 days is the time period within which you're supposed to file your claim. क्योंकि क्या होता है, नहीं तो आप बहुत delayed claim file करते हैं. By then already resolution applicants have come in the picture and so on and so forth. Usually what happens at the ground level, we see that if it is आपने 90 दिन में नहीं किया, बाद में the RP may or may not accept your claim, not on the merits but on the delay. You file an application in the NCLT and try to get the delay condoned in the NCLT. तो आप NCLT के पास जाते हैं. Generally NCLTs are a little lenient क्योंकि उनको भी मालूम है यार, it's a credit, especially if it's an operational credit, तो generally उनको condone हो ही जाता है. बट अगर आप बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं और आपने बहुत लंबा चौड़ा डिले किया है, then there is something to be concerned about, क्योंकि you can't sleep over, as you know, law में वो concept, you can't sleep over your rights and wake up one fine day and say कि नहीं, I should be heard. So delays can be condoned, and then that claim can be relooked at on a merit perspective and admitted accordingly. But then if you go too late, almost at a time when resolution applicants are negotiating, you're going to face more difficulty. ये again, I will not call it unfortunate, but ये reality है. और मैं हमेशा I always say this in all my discussions. हमने GST को accept किया ना, काफी complex law है, काफी difficult है, challenges है. So if IBC is throwing up some practical challenges, I think the sooner we accept it, the more streamlined we are getting towards, I think, a process. So that's my answer. So again, I think we've shot way beyond the time that we had asked of you. But Anandji, I must say that this is one of the most, I would say, elaborate sessions, one of the most, I would say, enlightening sessions that anyone, any practitioner of the IBC, any person who wants to get an understanding of the IBC, any person who wants to, who's already practicing and wants to learn more about the IBC, or who wants the analysis word that we've used for the title, I think that's absolutely perfect for this. And you've actually very, very well taken us through the entire journey of this particular law. And I do not understand how many more or other practitioners would be there who would have had this fantastic insight into this very unique law today. And it's just been a privilege today to have had this occasion of learning from you. And I'm sure that anyone and everyone who's referring to this video on YouTube or later on, wherever they may get access to this, they will greatly benefit from this. And we're just hopeful, as you all already said, that there is so much more that needs to be discussed
about this law that we'll have the occasion and opportunity of hosting you not once but multiple times. I have ideas now because you mentioned there was this word also which you used, a workshop. So I'm absolutely very keenly looking towards that also, that how we can possibly have some sort of an offline activation also with you. It's going to be absolutely remarkable. We're just truly very, very grateful to you for taking time out today. And it's our blessing to have had this occasion of getting this in-depth insight into this very unique law. No, I must tell you, thank you so much. I think you're very kind with your words. Not at all, absolutely something which I like doing. The fact that I've written my book on insolvency code, I always believe in one thing, कि it's time. The way, एक तो I generally believe it's time for India. India's time has come, and I think the common person, or I would say the relevant stakeholders, or even the younger lawyers, they should have access to the law. They should have access to learning. So I'm happy to share whatever little bit 2 cents I can put in. So definitely, thank you so much. Thank you so much for having me over. It was my pleasure to address and to interact with all of you on this platform. So it's